Hello students, this is Susmita. Welcome to my channel sus@mita. Today we will discuss the question answer of class 6 science chapter number 10, that is the motion and measurement of distances. The first question is, give two examples each of modes of transport used on land, water and air. लैंड में, वाटर में एंड एयर में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो, उनके दो दो एग्जाम्पल्स दीजिए. सो द आंसर इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. मैंने लिखा है ट्रक, बस. आप चाहो तो लिख सकते हो कार, साइकिल एक्सेट्रा. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. पानी में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं? मोटर बोट्स, शिप्स. टू एग्जाम्पल्स. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट on air, I have written aeroplane and helicopter. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फिल इन द ब्लैंक्स. सो हियर 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर. हमने ये मैथ में भी पढ़ा है. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आई हैव रिटन दिस वन. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज 5 किलोमीटर इज डैश मीटर. हमने मैथ में पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर इक्वल टू इंटू 5, राइट? सो दैट इज द 5000 meter. Next, motion of a child on a swing is dash motion. ये हमने पहले भी पढ़ा था. This is the periodic motion. Next is motion of a needle of a swing machine is, this is also the periodic motion. Next, motion of a wheel of bicycle. Bicycle का wheel कैसे move करता है? Circular motion में. So this is the circular motion. Next question is, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? किसी का पेस और फुटस्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के जैसा क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये हमने पहले भी पढ़ा है. स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? जो यूनिट सबके लिए सेम होता है, फिक्स्ड होता है एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट. बट if the unit is not same for everyone, it is different for everyone, और वर्ल्ड में सब लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, then it is called the non standard unit. so इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? here it is written answer, a pace or a footstep of every human being is not equal in size. साइज में सबका सेम नहीं होता है फुटस्टेप. it varies person to person. example, the pace और फुटस्टेप ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी स्मॉल. एक बच्चे का फुटस्टेप बहुत छोटा होता है. वेरेज दैट इन केस ऑफ एन एडल्ट इज लार्जर इन साइज. सो ए पेस और फुटस्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है, छोटे से बड़ा. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर. सो सबसे छोटा इनमें से कौन है? 1 मिलीमीटर. नेक्स्ट कौन आता है? 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 1 मीटर, देन 1 किलोमीटर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर. एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर and millimeter. The height of a person is 1.65 meter. As we know, 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1.65 meter is equal to 1.65 into 100. What will be the answer? 165 centimeter. So in centimeter, the height is 165 centimeter. And in millimeter, as we know,
1 centimeter equal to 10 millimeter. So 165 centimeter equal to 165 into 10. So what will be the answer? It is 1650 millimeter. The next question is, the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है. 3250 को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. The distance, so the answer you have to write like this. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. But as we know, 1000 meter equal to 1 kilometer. So 3250 meter is equal to 3050 divided by 1000. So just you have to put a decimal before 3 digits. That is 3.250 kilometer. So in kilometer, the distance between Radha's home and her school is 3.250 kilometer. So the next question is, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 cm and at the other end it is 33.1 cm. What is the length of the needle? Okay. So एक knitting needle है जिसका लेंथ आपको नापनी है, तो आपने एक स्केल लिया, लेकिन आप 0 से मेज़र करने के बदले 3 cm से आपने काउंटिंग करना स्टार्ट किया एंड आपने देखा स्केल के दूसरी तरफ जहाँ पे मेजरिंग आपका एंड हुआ, दैट इज द 33.1 cm. सो सपोज दिस इज द निडल एंड यू यूज्ड ए स्केल टू मेजर दिस निडल एंड यू स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम 3 एंड योर लास्ट रीडिंग इज 33.1. तो आपने क्या किया, स्केल के स्टार्टिंग के 3 काउंट्स छोड़ दिए हैं. तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द निडल? सो यू हैव टू subtract 3 from 33.1. So the answer should be written like this. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 cm. एक एंड में उसका रीडिंग था 3 cm. दूसरे एंड में the reading of the scale at the other end is 33.1 cm. So what is the length of the needle? The length of the needle is 33.1 cm minus 3.0 cm. The answer is 30.1 cm. Next question is, write similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. एक बाइसाइकिल चल रही है, सीलिंग फैन भी घूम रही है, तो इन दोनों के बीच आपको सिमिलरिटीज बताना है एंड डिफरेंसेस भी बताना है. तो सिमिलरिटी क्या है? बाइसाइकल्स का जो व्हील है एंड सीलिंग फैन का जो ब्लेड्स है, दोनों ही सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं. बट सीलिंग फैन जो है एक ही जगह पे मूव कर रहा है एंड बाइसाइकिल आगे भी बढ़ रही है. दैट्स वाई इट इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन आल्सो. कोई भी चीज़ जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम बोलते हैं द मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. सो बाइसाइकिल आगे भी बढ़ रही है, सो दिस इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन. बट द सीलिंग फैन एक ही जगह पे फिक्स है, सो ये कोई रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो लिखेंगे कैसे? सो लेट्स सी द आंसर. द सिमिलरिटीज बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन that has been switched on is that they both move in a circular path around a center. So both of them show circular motion. So what is the difference? The difference is that the bicycle shows both circular and rectilinear motion while moving on ground, but the ceiling fan shows only circular motion. It does not show rectilinear motion. Right? Now the next question is, why would you not like to use measuring tape made up of an elastic material like rubber to measure distance? तो इलास्टिक मटेरियल से बनी हुई कोई भी चीज़ से आप
मेज़र क्यों नहीं करना चाहेंगे कोई भी डिस्टेंस को? द आंसर इज द रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट. आई वुड नॉट लाइक टू यूज a measuring tape made up of an elastic material like rubber to measure distance because it will give incorrect answer. What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? ऐसे कोई टेप से डिस्टेंस नापने से आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा, इसके बारे में भी बताइए. सो द आंसर इज I may face many problems with elastic tape, like while measuring distance it may get stretched. जब आप मेज़र कर रहे हो तो इलास्टिक टेप जो है वो स्ट्रेच हो सकता है, जिससे आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिल सकता है. ड्यू टू स्ट्रेचिंग I may get different results with the same tape. And the third point is some other person if measures with the same elastic tape, वही सेम इलास्टिक टेप से कोई और इंसान भी अगर मेज़र करता है उसको भी डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा. ही विल आल्सो गेट डिफरेंट रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. आंसर इज पीरियोडिक मोशन के कोई 2 एग्जाम्पल्स बताइए. मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम एंड मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार व्हेन प्लेड. पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल्स क्या है? मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार. और एग्जाम्पल्स हमने भी जैसे पढ़े थे, द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम एंड द गर्ल सिटिंग ऑन द स्विंग एंड मूवमेंट ऑफ निडल ऑफ ए स्विंग मशीन. कोई भी स्विंग मशीन का निडल जब अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स मूव करता है, दैट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, राइट. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.